हेलो एवरीवन। आज की क्लास में देखेंगे अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से क्या समझते हैं कि शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल यानी कि विलेज एरिया या स्मॉल टाउन एरिया टू अर्बन यानी कि सिटीज एरिया। ठीक है, अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी वजह से, या हो सकता है एडुकेशन अच्छा, स्कूलिंग अच्छा, कॉलेज की वजह से हम शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर बिजनेस की वजह से हम कर रहे हैं, या जॉब के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, या सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, सर्विसेज कहाँ अच्छा देंगे जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, प्लम्बर है, ठीक है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर, या कोई पार्ट इलेक्ट्रिशियन। कोई भी सर्विसेज अगर देगा तो कहाँ देगा, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो वहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा दे पाएगा, ज़्यादा अर्न कर पाएगा। ठीक है, तो कोई भी वजह हो, या फिर कोई अगर बिजनेसेज है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ऑफिस खोलने के लिए तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा, रोड ज़्यादा अच्छा रहेंगे। या फिर अगर बात किया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी अगर बात करें तो शहर में इलेक्ट्रिसिटी एंड बाकी सब फैसिलिटी, ड्रेनेज, ये सब कुछ यहाँ पे शहर में ज़्यादा अच्छा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ऑफिसेज अगर कोई खोलना है तो कोई भी ऑफिसेज के लिए यहाँ पे शहर में आज देखते होंगे ज़्यादातर जो मेन हेड क्वार्टर रहते हैं किसी बैंक का, किसी भी ऑफिस का, किसी भी कंपनी का, तो ज़्यादातर कहाँ रहते हैं आपको, वो आपको मिलेंगे बड़े बड़े शहर में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। ठीक है, तो इस ढंग से, ताकि वहाँ पे सभी सुविधा जो है वो वहाँ पे उपलब्ध है। तो आने वाले समय में जो वर्ल्ड पे जो लोड है, ये ऑलमोस्ट लोड है बिल्डिंग अराउंड 3 बिलियन हाउसेज। ठीक है, 3 बिलियन, या रहने का इसका व्यवस्था, हाउसेज या फ्लैट इसको बोल सकते हैं, इसके रहने का 3 बिलियन पीपल के लिए हाउसेज या फ्लैट यहाँ पे हमको इंतजाम करने का, क्योंकि लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं बहुत तेज रफ्तार से। ठीक है, एक टाइम था जब यहाँ पे 1850 में लैटिन अमेरिका की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत फास्ट यहाँ पे अर्बनाइजेशन हुआ। तो लैटिन अमेरिका की अगर बात करें तो 1850 में अराउंड 40% वेयर पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, while in next 40 years in 1890 the population in urban area was around 80%, and it kept maintain itself from year 1950 to 2000. So the population in urban areas are very high. Okay, because of these facilities the shifting came more in the urban areas, and now the same scenario is for the countries belonging to Asia such as India, China, and many more, in which the people are shifting itself from rural areas to the urban areas. Okay, so we have to maintain the things that need to be supplied to these people, such as road and services and schooling, park. Okay, you need to provide park, you need to provide schooling, you need to provide
the places for temple and mosques, okay, religious places, because where the more the amount of people will live, there will be more usage of these things. And we have to also consider that in urban areas the cost of land is very high, so people are building around 20 floors, 30 floors, 35 floors, okay. It's not like in village or a small town that people are living in 2 or 3 floors building, because the land is limited area, okay. But people migrating from the rural to the urban areas are increasing day by day, so they have to accommodate, and there is only one option, that you build a higher floor buildings, okay. In urban population, if we talk about the urban population in India, it was around 27 to 28% in 2001, while it is around 31.3% in 2020. It means the current year, okay. The rate of rise of urban population was around 3.8% per annum, means 3% it was increasing at that stage of time per annum in 1970, 98, 71. The graph is not a straight graph, is something like that, increase, then there decrease, then again increase, then again decrease, in such a way. But in 1970-71 more people were shifting towards the urban areas. The population in urban area was increasing around 3.8%, and the total population of India was increasing around 2%, okay. So total population increase was around 2%, while the urban population was 3.8%, means 1.8% more people shifted from rural areas to the urban areas. In 1991, when the population count was done through the United Nations Committee, it was around 2700 million people lived in urban, but again they rescheduled the counting and they say that the correct amount is 2400 million people are living in urban in 1991, means around 30 years ago. So the people have kept on increasing, and now the people have increased a lot of amount. But the scenario may or may not be like Latin America, that 80% of the population will live in urban areas. It may be or it may not be, okay. So we will talk in the next video more in detail about it, what are the consequences and what we have to consider while taking into account the urbanization, what problems can be faced and how can we tackle this will be discussed in the next video, okay. Thank you. What we will see in the next video will be around how the GDP is being affected, in what ratio is the GDP of Asian countries in respect to the European countries or American countries, okay. In the next 20 or 30 years, what will the scenario of the economy, okay, because in the American and European countries the economy is almost in a saturation, the GDP never increase
let's say it increased around 2%, 3%, or sometimes it 1% or 0%. While in India, the GDP sometimes increases 8%, sometimes it goes to 6%, then 5%. In this quarter, it has gone to minus 23 point something, 23% due to the corona pandemic. Okay, so but still it is in positive. Okay, so we'll talk about this in the later next video. Thank you.